Hey guys, this is Soumya and I welcome you back to my channel Colors of Life with Soumya. So last week I have posted a small travel vlog of mine because I went on a trip last month and I felt like I'll just share my experiences with you all, and it was an amazing trip. I had a great time. So if in case you have not watched that vlog, I'll just share the link above. You can just click on it and can watch that vlog. So let's come back to today's video. So what are we actually going to make in today's video? So during my last month's trip, मैंने उसी टाइम पे decide कर ली थी कि some of the beautiful memories that I'm carrying back home from this trip, I'm going to put them back on my canvas. So what I'm going to do today is I'm going to start with a very beautiful tropical flower which is known as the false bird of paradise. अब इसको false bird of paradise क्यों कहते हैं वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी जब हम लोग इस पेंटिंग को स्टार्ट कर देंगे. Anyways, मैं आपको इस वक्त ये बता दूं कि the scientific name of this flower is Heliconia rostrata. I don't know whether I'm pronouncing it correctly or not, but it sounds something like this. So what are we waiting for? चलिए जल्दी से पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं how this painting turns out to be. So जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही शेयर किया है, टुडे आई एम गोइंग टू पेंट अ ट्रॉपिकल फ्लावर एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस फ्लावर इज़ फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज. अब इसे फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज क्यों कहते हैं ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी देर में, बट उससे पहले आप जैसे जैसे मैं स्केच बनाती जा रही हूँ आप नोटिस कीजिए इसका शेप जो है बहुत ही डिफरेंट है. ऑल्दो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस फ्लावर बिफोर ऑल्सो. सो यू मस्ट बी नोइंग कि एक फ्लावर है जिसे बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं एंड इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम. बट इसको फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज क्यों कहते हैं? द रीज़न बीइंग इट एक्चुअली हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ टू द रियल बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर. So this plant is also known as lobster claws, and once again it's because of the similarity. So guys, the scientific name of this flower is Heliconia rostrata. So ये तो गया इसका scientific name and details about the flower. Another similarity, if you notice very nicely, you will find कि इस plant के जो पत्ते होते हैं, the leaves are very much similar to that of banana plant. Well, so बात करते करते we have already finished the sketching on the canvas. Now we have started with the coloring parts. तो सबसे पहले ये जो flower है इस flower को बनाऊंगी मैं. तो इस flower को color करने के लिए I'll be using quite a couple of colors like lemon yellow, chrome yellow, orange and then red. और इसके साथ हो सकता है कि मैं slide I'm going to apply a little bit of green of course and also a little bit of blue if required. And that is how I'm going to create the dark and light shadow and the highlights and everything, and I'll be focusing on each and every petals of this flower, so it's going to look very beautiful. Well, today I have decided कि ये जो पेंटिंग मैं बनाने वाली हूँ कैनवस पे I'm going to make it very different. So हर बारी क्या होता है, कोई भी पेंटिंग हो चाहे वो फ्लोरल पेंटिंग हो, लैंडस्केप हो, व्हाटएवर इट मे बी, मैं क्या करती हूँ, मैं पहले पेंसिल ड्राइंग करती हूँ, उसके बाद कलर्स से उस पेंटिंग को भर देती हूँ एंड आई ट्राई टू मेक इट लुक वेरी ब्यूटीफुल. बट आज मैं थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करूँगी. ऑफ कोर्स आप लोगों ने अब तक तो देख ही लिया है कि मैं फ्लावर को ऑलरेडी कलर करना स्टार्ट कर दिया है, बट फॉर द बैकग्राउंड आई एम गोइंग टू मेक इट मोनोक्रोमैटिक. सो मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग का क्या मतलब है? मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कोई भी एक सिंगल कलर को यूज़ करके और उसके साथ वाइट मिक्स करके पूरे पेंटिंग को कंप्लीट करना. सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लैक एज द मेन कलर एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू मिक्स वाइट, कभी ज़्यादा कभी कम, एंड आई एम गोइंग टू मेक लाइट एंड डार्क शेड्स एंड शैडोज़ एंड हाईलाइट्स एंड आई एम गोइंग टू मेक द एंटायर बैकग्राउंड विद मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट. Monochromatic background is something that I am doing for the first time and I hope that it turns out to be very beautiful, so I am just going to keep my fingers crossed. सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं ब्लैक और वाइट यूज़ करके ग्रे कलर बना रही हूँ, थोड़ा सा लाइट शेड में, थोड़ा डार्क शेड में, और उसी से मैं पूरा लीफ पेंट कर रही हूँ विद हाइलाइट्स एंड लाइट एंड डार्क शेडोज़ एंड एवरीथिंग. और उसके बाद ब्लैक और वाइट कलर से मैं उन लीव्स के ऊपर स्ट्रोक्स बना रही हूँ ताकि इट गिव्स अ वेरी रियल इफेक्ट.
और इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स को कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले मैं सारे लीव्स फिनिश करूँगी, फिर जितने भी स्टेम्स है, जो भी माइनर डिटेल्स है, सब करूँगी। एंड एट द एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू पेंट द बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए मैं वेट ऑन वेट टेक्निक यूज़ करूँगी। ऑल्दो आई नो कि आप पूछोगे कि सौम्या आप एक्रेलिक कलर्स में वेट एंड वेट टेक्निक कैसे यूज़ कर सकते हो, बट वेल गाइज, सो देयर इज़ नो एक्सेप्शन। एक्रेलिक कलर्स के साथ भी वेट एंड वेट टेक्निक के लिए आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। ब्रश की मदद से मैं सबसे पहले किसी भी एरिया में मुझे वेट एंड वेट टेक्निक करना है, मैं उस एरिया को पानी से अच्छे से वेट कर दूंगी और उसके ऊपर तुरंत मैं जल्दी से जो भी ब्लैक या वाइट जहाँ जहाँ पे भी कलर डालना है वहाँ कलर्स डालूंगी। बट इन दिस केस वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट यू नीड टू बी सुपर क्विक, नहीं तो पानी भी सूख जाएगा और यू नो एक्रेलिक कलर्स एक बार लगाते ही वो तुरंत ड्राई हो जाता है और वो फिर ना वो गंदा सा एक पैच दिखेगा। और अगर मेरा अब तक का प्रोसेस आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक कमेंट बटन बिलो। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन है लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वेल, कमिंग बैक टू द वीडियो, देखिए बैकग्राउंड में कलर्स कितने अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं एंड में क्या करूँगी, आई विल पुट सम फिनिशिंग टच लाइक एज ऑलवेज। बिना हाईलाइट के तो मैं किसी पेंटिंग को छोड़ ही नहीं सकती, मेरे लिए इट्स इनकम्प्लीट यू नो। सो आई विल डेफिनेटली बी पुटिंग सम एक्स्ट्रा इफेक्ट, एक्स्ट्रा मेहनत ऑन द बैकग्राउंड. For that, definitely I'll be using black only because that is the only color I have with me. So I'll be making some stems and some leaves and giving it some better shape and trying to fill the area so that it looks more dense. और मेरी हर एक पेंटिंग की तरह इस पेंटिंग में भी मैं एंड तक डिटेल से कम्प्लीटली भर दूँगी. Whip up my appetite, don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. So guys, here I am with my final piece and I am just enjoying it. So this is for the first time I have shared a painting with you which is partly in a monochromatic texture and I am really enjoying it. So please do let me know whether you like it or not. And if you like this painting, please do not forget to hit the like and comment button. And those who have already subscribed my channel, thank you so much. I would request the others to please subscribe my channel and keep me motivating. So that's all for today. See you again until in my next video. Bye bye.